Myself Professor Ajay Yadav. In today's session we are discussing about pigment. Okay? So for photosynthesis various raw materials are required, that is carbon dioxide and water, sunlight and pigment. These three raw material are very essential or play vital role in photosynthesis. Okay, so we discuss about pigment. Okay, so what is pigment? Pigment, the substance which is absorb specific wavelength of light is called as pigment. Okay, so pigments are basically three types. First is chlorophyll, second is carotenoid, third is phycobilin. Okay, so these are the types of pigment which play a vital role in the photosynthesis, or these pigments are absorb maximum light in the photosynthesis. Okay, so chlorophyll are seven type. So namely chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, bacteriochlorophyll, chlorophyll and bacterioviridae. Okay, these are the seven types of chlorophyll pigment. Okay, so chlorophyll A and chlorophyll B is most important pigment because chlorophyll A and chlorophyll B absorb maximum wavelength of light. So chlorophyll A and chlorophyll B is most important pigment. Okay, and this chlorophyll A present in all photosynthetic organism except photosynthetic bacteria. So photosynthetic bacteria जो होते हैं उनमें क्या होता है, chlorophyll A pigment नहीं होता है, but chlorophyll A and B is most important pigment and these pigment present in all photosynthetic organism. Okay, so chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll A, and here we write chlorophyll B. Okay, so chlorophyll A are bluish green in color. Chlorophyll A bluish green in color
chlorophyll A is C55H72O5 N4Mg. Okay, तो chemical formula of chlorophyll A C55H72O5 N4Mg. Okay, then chlorophyll A in reflected light it appear in red color. किसमें appear होता है? रेड कलर में. कौन सी लाइट में? in reflected light. So in reflected light chlorophyll A appear in red color, and in transmission transmitted light it appears in कौन से? appeared in green color. So in transmitted light chlorophyll A appeared in green color. Okay, so chlorophyll are bluish in green color. Okay, the formula of chlorophyll A is C55H72O5 N4Mg, and in reflected light it appear in red color, and in transmitted light it appear in green color. And chlorophyll A are insoluble in water, but it is soluble in organic solvent. किसमें? organic solvent में ये dissolve हो जाते हैं. अभी organic solvent कौन कौन से? like chloroform, benzene, alcohol. These are the organic solvent. In these organic solvent chlorophyll are soluble. Okay, so now we discuss about chlorophyll B. Okay, so chlorophyll B are olive green in color. Okay, so chlorophyll B olive green in color, and the formula of chlorophyll B C55H70O6 N4Mg. Okay, this is the chemical formula of chlorophyll B C55H70O6 N4Mg. Okay, so in the reflected light chlorophyll B appeared in brown red in color. Okay, so reflected light में chlorophyll B कौन से कलर में रिफ्लेक्ट होता है? ब्राउन रेड कलर में रिफ्लेक्ट होता है. But in transmitted light chlorophyll B appeared in yellow green color. कौन से कलर में आता है? येलो ग्रीन कलर में अपीयर होता है. So in the transmitted light chlorophyll B appeared in yellow green color. Okay, so chlorophyll B also insoluble in water, but it is soluble in organic solvent, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन आता है. सो क्लोरोफॉल, बेंजीन,
chloroform, benzene and alcohol. These are the organic solvent. So chlorophyll A absorb maximum light. Chlorophyll A absorb maximum light. क्या एब्जॉर्ब करता है? मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर कहते हैं. क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर. ओके, सो क्लोरोफिल ए इज नथिंग बट रिएक्शन सेंटर. ओके, so we discuss structure of chlorophyll. So chlorophyll is made up of two part. Okay, क्लोरोफिल जो होता है दो पार्ट से बने होते हैं. कौन सा? पहला फर्स्ट हेड पार्ट एंड सेकंड इज टेल पार्ट. Okay, so head part is nothing but porphyrin head, and tail part is called as phytol tail. Okay, so now we draw the diagram. So Mg, first we draw the porphyrin head here, and this is tail. Okay, in the porphyrin head, Mg present in the center and surrounded by 4 nitrogen. Okay, then each nitrogen contain carbon containing ring. This is first carbon, first ring, second ring, third ring and fourth ring, and fifth ring is also attached with third ring. Okay, so first to fourth ring, first to fourth ring means 1 2 3 4. ये चार रिंग को क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग बोलते हैं. बट फिफ्थ रिंग, ये जो रिंग है, ये रिंग, इस रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटोनॉन. साइक्लोपेंटोनॉन रिंग. साइक्लोपेंटोनॉन रिंग. ओके, सो अब यहां पे हम क्या करेंगे? कार्बन नंबर. सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन and fifth carbon, sixth, seventh, eighth, and ninth is here and 10th carbon is here. Okay, so at the position of third carbon, in case of chlorophyll A, at the position of third carbon is R group are attached. Okay, R group are attached. So in case of chlorophyll A, in the place of R, methyl group are attached as a functional group. But in case of B, at the place of R, aldehyde group are attached as a functional group. Okay, so this structure is called as porphyrin head. And the diameter of porphyrin head is 15 Armstrong unit. कितना होता है? 15 Armstrong unit. And here the tail region, tail contain long hydrocarbon chain. Long hydrocarbon tail is a long hydrocarbon
chain. Okay, so in the phytol ring, in the phytol tail, 20 carbon are attached at the 7th carbon. Okay, तो इसमें ये phytol जो tail है इसमें कितने होते हैं 20 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ये क्या होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द लेंथ ऑफ phytol tail is 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट. इसका लेंथ कितना होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है. ओके, सो बट अभी हमको याद क्या रखना है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा CH3 मॉलिक्यूल रहेगा. क्या रहेगा मिथाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप रहेगा. बट इन केस ऑफ बी यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO मींस अल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप रहेगा. ओके, सो ये था स्ट्रक्चर. सो क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट. हेड इज नथिंग बट पोरफायरिन हेड एंड टेल इज कॉल्ड एज phytol tail. So Mg present in the center surrounded by 4 nitrogen and each nitrogen contain 4 carbon compound ring and that ring is called as pyrrole ring, but fifth ring is called as cyclopentanol ring. Okay, at the third position of carbon in case of chlorophyll A, at the third position R group are attached. R group means it contain methyl group as a functional group. In case of chlorophyll B, at the place of R, aldehyde group are attached. And at the seventh carbon का क्या होगा long hydrocarbon, chain of long hydrocarbon are attached by ester bond. इनके जो seventh carbon और long chain के बीच में जो bonding है वो bonding कौन सी रहेगी ester bond रहेगा. कौन सा रहेगा ester bond. So seventh carbon attached with long hydrocarbon by ester bond. Okay, so this is the structure of chlorophyll. So second pigment is carotenoid. Second pigment carotenoid. Carotenoid is called as lipochrome. Is also called as lipochrome. Okay, why it is called lipochrome? Because it is fat soluble. It is fat soluble. These pigments are insoluble in water, but it is soluble in fat. Okay, so insoluble in water but soluble in fat. That is why carotenoid is called as lipochrome. Okay, and carotenoid are two type. कितने टाइप्स के होते हैं टाइप्स. so ये two types के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज कैरोटीन. क्या है कैरोटीन. एंड सेकेंड इज xanthophyll. क्या है xanthophyll. Okay, these are the two types of carotenoid. Okay, so xanthophyll are orange red in color. Okay, but xanthophyll are yellowish brown in color. कौन से कलर में होता है yellowish brown in color. Okay, the formula of carotene is C40H56. So chemical formula of carotene is C40H56. But in case of xanthophyll, the formula of xanthophyll is C40H56O2. Okay, this is the formula of xanthophyll. Okay, so carotene pigment is also called as प्रोविटामिन. क्या बोलते हैं उसको प्रोविटामिन बोलते हैं. क्यों प्रोविटामिन मिलते हैं? क्योंकि जो कैरोटीन होता है कैरोटीन कन्वर्टेड इनटू
vitamin. Okay, so beta carotene present in the carrot, and it is converted into vitamin A by the process of hydrolysis. Okay, so इसलिए कैरोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोविटामिन बोलते हैं. एंड lycopene present in the pericarp of tomato. Okay, that is why tomato looking red in color. So lycopene क्या होता है? पेरिकार्प ऑफ टोमेटो में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाहर जो टोमेटो, जो राइट टोमेटो होते हैं वो क्या अगर दिखते हैं? रेड कलर में दिखते हैं. एन एग्जांपल ऑफ xanthophyll इज कौन कौन से हैं? फ्यूकोजैंथीन, okay, and lutein. Okay, these are the two example of xanthophyll. The formula of fucoxanthin, अभी chemical formula of xanthophyll is C40H56O6. ओके, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है किसका? फ्यूकोजैंथीन का. ओके, these are the second type of pigment. So carotene is also called as lipochrome because it is fat soluble pigment. Okay, and carotenoid are insoluble in water, and carotenoid are two type, one is carotene and other is xanthophyll. So carotene are orange red in color, and the formula of carotene is C40H56. And xanthophyll are yellowish brown in color. The formula of xanthophyll is C40H56. Sorry, make a correction for here. H56 and O2. Okay. And example of xanthophyll is fucoxanthin and lutein. So formula of xanthophyll C40H56 and O6. And carotene is also called as provitamin because in the carrot, if we are taking example of carrot, so in the carrot beta carotene are present. So beta carotene converted into vitamin A by the process of hydrolysis. That is why carotene is called as provitamin. Okay, so leucopene present in the pericarp of tomato. So third pigment is phycobilin. Okay, phycobilin mostly found in blue green algae. ओके, कहां पे पाया जाता है? ब्लू ग्रीन algae. जो ब्लू ग्रीन algae को क्या बोलते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन algae is also called as cyanobacteria. So phycobilin mostly found in or abundantly found in cyanobacteria. So phycobilin are also two type. कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं. कौन कौन से? First is phycocyanin and second is phycoerythrin. ओके, पहला टाइप क्या है? phycocyanin. दूसरा टाइप है phycoerythrin. So phycocyanin are purple in color. कौन से कलर में होता है? पर्पल इन कलर. एंड phycoerythrin आर रेड इन कलर. कौन से कलर में होते हैं? रेड इन कलर. ओके, देन द formula of phycobilin is C33
38O6N4. ओके, सो फाइकोबिलिन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C33H38O6N4. ओके, एंड दिस phycobilin phycocyanin absorb maximum light at 621 nanometer, but in case of phycoerythrin absorb maximum light at 545 nanometer. ओके, कितने पे एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लाइट? 545 नैनोमीटर पे. बट इन केस ऑफ फाइकोसाइनिन कितने पे एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लाइट? 621 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है. सो थर्ड पिगमेंट फाइकोबिलिन, ये किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में. ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया. एंड ये दो टाइप के होते हैं. कौन सा पहला टाइप है? फाइकोसाइनिन एंड सेकंड इज phycoerythrin. So phycocyanin purple in color and it absorb maximum light at 621 nanometer. But in case of phycoerythrin, it is red in color and it absorb maximum light at 545 nanometer. Thank you.